premises. Now, the Allahabad High Court has dismissed petitions of the Masjid Committee. The Allahabad High Court has dismissed in particularity the Anjuman Intizamiya Masjid Committee's challenge to the Varanasi district judge's July 21st order that the ASI can conduct a survey inside the Gyanvapi mosque premises. Vishnu Shankar, who's appearing for the Hindu side, now it's a proper Hindu side and a Muslim side, that's how all media channels are putting it out. District court ka order aaj se prabhavi ho gaya. Structure image hone ke tark को कोर्ट ने खारिज कर दिया. Do throw some light on that as well, Ashok. And the Muslim Paksh, now they're going to move the Supreme Court, which is another important development, because very smartly what I have been seeing for the longest time is that the ASI was conducting that particular survey, and within an hour the Muslim side was able to stop that survey. That got postponed. The Supreme Court heard it as an SLP on Monday. All of that happened. So the Muslim side is also, they know how to play their cards right. But right now, first and foremost, what are you thinking? What are you picking up from the, the verdict? Yeah, you're right that this verdict came in at around 10 a.m. in the morning today. It was delivered by the Allahabad High Court Chief Justice Pritinkar Divakar, and he basically dismissed the challenge of the Masjid Committee to the District Court's order, which had said that an ASI scientific survey should be carried out at the Gyanvapi mosque site, and basically this survey was ordered on the plea of 5 Hindu women who had approached the court saying that they have a right to worship here, and they believe that this particular Gyanvapi mosque has been built over the structure of a pre-existing Hindu temple. Now this is where the matters stand at the moment. But as far as the Allahabad High Court is concerned, the Allahabad High Court has put out some riders also. It is said that, firstly, while dismissing the application of the Muslim sides, it said firstly, this kind of a survey is essential or necessary because they want to discover the truth around the issue, number one. Number two, the court said that we are also convinced by the affidavit which has been put out by Archaeological Survey of India, which clearly said that initially they will be carrying out measurements, photographs and radar imaging of the site. Thereafter, if any digging or excavation work has to take place, they will again approach the court and then carry out the digging and excavation work. So possibly the High Court seems to have been impressed with this argument that at the moment there is no digging and excavation work which is going on, and there is no danger to the structure that exists at the site. So they believe, the High Court believes that nothing will be done to the structure and the ends of justice will be met, and that's why they have given the green signal to the ASI survey. Which is what happened on the previous time as well, when Tushar Mehta called up the ASI. They said, are you removing any bricks? And he told the Supreme Court that not a single brick is going to be removed. We're only going to carry out photographic, survey of the entire area. Well, that is the statement made by the Archaeological Survey of India and the Supreme Court. Now what had happened was that was the first day of the survey, and the Supreme Court at that point in time wanted to know that what kind of a survey work will take place at the Gyanvapi mosque site, because there was no clarity. They had just said ASI should go and carry out scientific survey, and we had seen images beamed on the television screens showing that how 30 people from the Archaeological Survey of India had congregated to that site carrying various instruments, and there was an apprehension which was expressed by the Muslim side saying that there will be excavation work which will be carried out, and once the excavation or digging work gets carried out, there is a danger that this structure, which is more than 1,000 years old, that is what the Muslim side claims, could be damaged or could come tumbling down. And then the Supreme Court had said that, okay, we are not going to go into the merits of the case. We will ask this Archaeological Survey of India to just put a halt on their survey activity which they are doing. In the meantime, what the Muslim side can do is could approach the Allahabad High Court, which is the correct appellate forum, and argue the matter in the Allahabad High Court. It almost felt like the Supreme Court and the Chief Justice of India saying that we've got a lot of other work to do also here. So how about you finish this off with the Allahabad High Court? You've got some time with you. Take it there. Until then, status quo has to be maintained. Yeah, it has to be maintained. But what is interesting, Kabir, here is the fact that this matter was taken up on priority by the Allahabad High Court.
the day they got the Supreme Court order, the very next day, the Allahabad High Court started carrying out hearing in this matter, and they heard both the Hindu sides and the Muslim sides, and the Muslim side's basic argument in this particular case was that, number one, that there is a basic law, the Places of Worship Act 1991, right, which says that all religious structures which exist in this country will maintain their existence, and there will be no change which will be brought into it. They had said that until and unless this particular hurdle is crossed by the Hindu sides, if the because there is a law in place which forbids or which prohibits any change in the character of a structure which existed as on 15th August 1947. So they said that they have not been able to show that how will they overcome this law. The second thing they said is that these women, these 5 women who have approached the district court and filed a suit claiming that this Gyanvapi mosque has come up on a pre-existing structure of temple, they have not been able to give any evidence. So far what they have said is just oral evidence. But at that point in time, the district judge Varanasi said, look, what they are asking for is that if ASI survey is carried out at this site, there will be more evidence which will be forthcoming. And I don't think that basically their lack of agency for providing evidence in front of the court is where the ASI comes in. I understand, and you know what, we'll talk a little bit more about what the Muslim side can now do, because Asaduddin Owaisi at the parliament also spoke exactly about the Places of Worship Act. And when we're talking about Hindu side and Muslim side, how can you not take into account somebody like Asaduddin Owaisi who said ki sab jagah khudwa denge kya aap? Then I mean, will you start digging up every place? And I understand why the Muslim side also did not want this, or the Supreme Court wanted to know what kind of excavation was taking place, because any kind of digging is as good as the temple, is as good as the structure coming down in its own sense. The image or the the view, the perspective that comes out is that ki ho gaya, gir gayi, masjid gir gayi. Let's just quickly listen into some reactions coming in from the advocates, and also what interestingly the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, had to say. Let's listen into that and then we'll come back for more. चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि एएसआई ने एफिडेविट फाइल किया है और उस एफिडेविट के कंप्लायंस में जो लिखित एफिडेविट दिया गया जी, उस एफिडेविट के कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दिया है तो कोई मतलब नहीं है उसको डाउट करने का, और जो एएसआई ने एफिडेविट दिया उसके कंप्लायंस में ये पूरा सर्वे किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है, ये भी आदेश में हुआ, और सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए, इसमें कोई एडजमेंट ना हो, ये भी कोर्ट ने आदेश पारित किया। कोई समय सीमा रखी गई है कितने दिन में एएसआई को सर्वे करना है? कोई समय सीमा नहीं किया है, आज से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी होगा। कोई विशेष टिप्पणी हाईकोर्ट ने की, जो आपने विशेष टिप्पणी करी जो हाईकोर्ट ने ये कहा कि जितने हमने केस लॉज दिखाए थे, लीगल पोजीशन यही है कि एएसआई सर्वे किसी भी स्टेज पे हो सकता है, और जैसे कि आज मुस्लिम पक्ष का बराबर आर्गुमेंट था कि एएसआई सर्वे स्टेज पे नहीं हो सकता है, उस आर्गुमेंट को भी कोर्ट ने खारिज किया, और हमारे जितने तर्क थे, कंटेंशंस थे, सारे आर्गुमेंट्स को कोर्ट ने इन टोटो माना है और कहा एएसआई सर्वे से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। किस क्षण से शुरू हो जाएगा एएसआई? आज से शुरू हो सकता है, क्योंकि आज से ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी है। देखिए, एएसआई ने अपने एफिडेविट में क्लियर किया है कि जो खुदाई की बात है वो आउटर एरिया में स्ट्रक्चर के अंदर खुदाई की कोई बात नहीं है, और अगर वो खुदाई करेंगे भी तो कोर्ट से परमिशन लेके करेंगे। ये एएसआई का एफिडेविट था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हृदय से स्वागत करता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि एएसआई की सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी, और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है, श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा, और शिव भक्तों की जो मनोभावना है, मनोकामना है, वो पूर्ण होगी। सर, कहा जा रहा है सर एएसआई सर्वेक्षण के बाद सत्य की जीत होगी, सर इसको किस तरह? नहीं, मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो एएसआई को सर्वे का आदेश दिया है उसका स्वागत करता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वे के माध्यम से जो मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर का विध्वंस किया था
और उसको छिपाया गया था, वो सच बाहर आएगा। बाकी अभी मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। ये समझिए कि हिंदू पक्ष की आज जीत हो गई। भले ट्रायल बाकी है इस केस का, लेकिन आज जीत तो हो गई। पूरी तरह से ऑर्डर हमारे पक्ष में रहा, कारण कि एएसआई ने क्लियर कर दिया है कि हम किसी स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा, कहा कि जब स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचना है तो कोर्ट का ओपिनियन ये है कि वहां एएसआई सर्वे होना चाहिए। ये दोनों ही पक्षों की फायदे की बात है और कोर्ट का निचली अदालत में जो ट्रायल होगा वो सही तरीके से हो सकेगा। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस केस का जो ट्रायल है मेरिट प्रभावित नहीं होगा इस आज के फैसले से। लेकिन बतौर हिंदू पक्षकार मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदू की बहुत बड़ी जीत है और आदि विश्वेश्वर मंदिर का, भव्य मंदिर का रास्ता आज से प्रशस्त हो गया। ये अलग बात है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तमाम जगह जाएंगे, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन इस केस में कुछ लीगल लैकुना नहीं है। मुझे लगता है कि सब सही है। सौरभ जी, जिस तरीके से कहने का आशय ये है कि जो सेशन कोर्ट ने सुनाया था हूबहू उसी से अब कार्रवाई होगी, एकदम अब रिस्टोर हो गया है। जो सेशन जज के ऑर्डर में, डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर में एक्सकेवेशन वर्ड यूज था, तो उस खुदाई और इस तरह से नहीं होगी। तो जीपीआर सर्वे और तमाम जो टेक्निक्स होगी जिससे स्ट्रक्चर को नुकसान ना हो, तो मुझे लगता है कि वो तकनीक काफी है जो है तमाम हिंदू मंदिरों के अवशेष को वहां से निकालने के लिए, वहां समझने के लिए कि उसके नीचे भी क्या है। ऊपर तो मंदिर है ही, वो मस्जिद कहां से है जी। दूसरा पक्ष जो है उस तरह कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब जाने दीजिए। वो तो देखिए संविधान और जो हमारे कानून है उसमें सबको समान अवसर दिए जाते हैं और देना भी चाहिए, तो वो जाएं। लेकिन उससे हमको नहीं लगता कि एएसआई सर्वे रुकेगा उससे। एकदम हिंदुओं की जीत है आज, बहुत बड़ी जीत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी प्रकरण में आर्कियोलॉजी सर्वे की कार्रवाई को अलाउ कर दिया है। जो मुस्लिम पक्ष जाके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी और उसके आलोक में हाई कोर्ट उन्हें कहा गया था कि आप आइए, और वहाँ पे पूरा विचारण हुआ और आर्कियोलॉजी सर्वे ने अपना हलफनामा देके अपने सारे तथ्यों को रखा कि किसी प्रकार से ढांचे को नुकसान नहीं होगा। और साथ में यह भी हिदायत है उसमें कि जो वजू खाना है जिसमें शिवलिंग प्रकट हुए हैं उसको किसी प्रकार से नुकसान या छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और ये पूरी तरह से पूरे परिसर का जो बैरिकेटेड एरिया है, रकबा नंबर 9130 जिसमें कथित ज्ञानवापी मस्जिद अवस्थित है, उसके सर्वे कराने की बात आ गई है। तो माननीय न्यायालय का ये आदेश आज काशी में आया। अभी अभी हमारे मित्रों को सबको अवगत हुआ और सभी हर हर बम बम बोल रहे हैं, अत्यंत प्रसन्न हैं कि आर्कियोलॉजी सर्वे हो जाएगा, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमेशा के लिए एक जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है उसका समाधान हो जाए। और दूसरा विषय यह है कि कोई भी न्यायालय किसी विषय पर निर्णय देने से पहले वो युक्त निर्णय दे जिसमें वैज्ञानिक तथ्यों का समावेश होना चाहिए। इस आधार पे ये बड़ा ही समीचीन होगा कि आर्कियोलॉजी सर्वे हो जाए, हमेशा के लिए इस विवाद का पटाक्षेप हो और वहाँ पे एक वैज्ञानिक आधार प्राप्त हो, जिसमें मुख्यतः फोकस्ड किया गया कि जो सेंट्रल डोम है, बनारस के जिला जज का निर्णय था कि सेंट्रल डोम जो पिछली दीवार है जिसपे नागर शैली के भग्नावशेष का वहाँ पे पड़ा हुआ है और उसमें स्वास्तिक है, चिन्ह है, गदा है, त्रिशूल है इत्यादि है, सब बता रहे हैं। वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए कि ये वैज्ञानिक कसौटी पर कितना खरा उतरता है, क्या नहीं। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है, माननीय न्यायालय स्वयं देख लें। अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, पुरानी गलतियों की पुनरावृत्ति न होने दें। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उपलब्ध साक्ष्य जो इस बात को प्रमाणित करते हैं। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, वहां तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है, त्रिशूल कैसे वहां बने हुए हैं। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। देखिए, एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है, एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है
उसको कोई दिखा नहीं सकता है। आप ढोंगी किसे कह रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, जो उन प्रमाणों को नकार रहा है, उन प्रमाणों के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब, तो जबरदस्ती वाली बात करते हैं। देखिए, आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहां की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब, ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। Well, so the Chief Minister's appeal over there, of course, not a very latest reaction, but it holds significance today. More than appeal, it seems like a warning to the other side. But, politics aside, looking at it only legally, because, he's talking about Trishul inside the Gyanvapi premises, and a sociologist is going to look at the picture and say, what a beautiful picture of India. I've got the Gyanvapi mosque right next to the Kashi Vishwanath Mandir. If one could sum up the entirety in one, picture, it would be this. The validity of Places of Worship Act, how is that going to be upheld here? Because then it is going to become precedent for all future cases like this one. And also, what next for the Muslim side here, Ashok? Well, I'll take your second question first, that what next for the Muslim side. Now, as far as the Muslim side is concerned, they have one more appeal left. They can go to the Supreme Court, not just go. In fact, I had a word with one of the advocates for the Muslim side, the Masjid Committee side, Senior Advocate Huzaifa Ahmadi, and he said to me that the Masjid Committee is going to file an appeal against the Allahabad High Court order, and they're going to come to the Supreme Court. So what I expect is that by tomorrow morning, this matter will be mentioned in the Supreme Court, where the Muslim side will still try to again persuade the Supreme Court that there should be a stay of the ASI survey as long as larger or bigger legal issues are not decided. Now, coming to your first question, what is the bigger legal issue here? The bigger legal issue here is the Places of Worship Act. Now, Places of Worship Act was enacted in 1991, and the Places of Worship Act said that any religious structure in whatsoever form as it existed on 15th of August 1947, its character will not be changed. So here what we are talking about is Gyanvapi Mosque. On 15th August 1947, it was a mosque which existed there. Now, if any attempt is made, even by trying to put out a case that this particular mosque has been built on a pre-existing temple structure, is it permissible in law? The answer under the Places of Worship Act is no. But this question has never been decided by the Supreme Court of India. So it will be interesting to see how this legal question is decided in this particular case by the Supreme Court of India. The second thing here is that what kind of messaging is actually going to the minority community, because what is happening is that it will have a ripple effect. If this particular thing goes on, it happens, it will have a ripple effect on other temples or other places of worship. Right. Okay. The other thing here is that this particular application which has been filed in the District Court of Varanasi is by 5 Hindu women seeking the right to worship at the mosque site, because they are saying that look here, we used to have temples and images of our gods and goddesses, and it still exists, and considering that, you should allow us the right to worship here, to carry out prayers. But so far nobody has said that this particular mosque should make way for a temple. Now that is where the interesting bit will come in. That is where the Places of Worship Act and these orders by the Allahabad High Court and the District Court will come into play, and for reconsideration of the Supreme Court of India. Well, absolutely. I mean, it is going to be beautiful imagery to look at, half a community, offering their namaz and the other one, conducting their puja. But I'm just saying, if the Chief Minister is saying कि दीवारें चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि यहाँ पर एक मंदिर है, but we have the Places of Worship Act already in place.
ऐसी तो कोई बाधा नहीं है. That act can be overruled. It can be, that obstacle can be passed. It's not like it's a set rule. No. See, when you have a law which has been enacted by the parliament, you have to comply with that law. You just can't say that taking into account the wishes of the majority community or the sentiments, religious sentiments of a majority community, this particular enactment or the play or implementation of the law can be put on hold. No, it can't happen. You have to follow the law. The law is a law and its implementation will be same for all citizens of the country, all religious communities that exist in this country. कानून के हाथों के बारे में क्या कहते हैं ये तो सबको पता ही है. In any case, Ashok, many thanks for joining me here in the studio. We're also going to quickly listen in to reaction coming in from the Muslim side, the Muslim cleric. Let's listen into that reaction really quickly. देखिए, आप सब जानते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद केस के सिलसिले में वाराणसी कोर्ट ने 21 जुलाई को ASI सर्वे का ऑर्डर दिया था और उसके ख़िलाफ़ मुस्लिम साइड ने सुप्रीम कोर्ट में एक petition 24 जुलाई को फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक सर्वे पर रोक लगाई और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का ऑर्डर दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में के सामने बात रखी गई और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे की इजाज़त दे दी है और जाहिर सी बात है कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर अमल किया जाएगा. लेकिन मुस्लिम साइड यही चाहता था कि ये जो हमारी तकरीबन 600 साल पुरानी मस्जिद है उसमें किसी किस्म की कोई खुदाई ना की जाए. तो कोर्ट ने मालूमात के हिसाब से उसमें खुदाई करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी है, खुदाई करने से मना किया है. और हम लोगों का एक जाहिर बात है केस ऑलरेडी चल रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ले करके और ये कानून इसीलिए बना था कि जितनी भी प्लेसेस हैं वर्शिप की उनका जो स्टेटस 15 अगस्त 1947 को था वो मेंटेन रहे. हम लोग सब यही चाहते हैं कि इस कानून का पूरी कड़ाई से इस पर अमल किया जाए जिससे कि अब कभी किसी भी इबादतगाह को लेके कोई कंट्रोवर्सी ना हो. हिंदू साइड की जीत हुई है या सच्चाई की जीत हुई है ये सिर्फ वक्त ही बताएगा. We'll have to wait and find out as to what the Muslim side is now going to do. Is it going to approach the Supreme Court today itself? Is it going to happen tomorrow? What are some legal remedies in front of the Muslim side? And what does this mean for the Hindu side? And largely, the bigger question, what does this mean for the Places of Worship Act 1991? The precedent it's going to create, the ripple effect that Ashok here was also talking about. Over here at News9, we'll continue to bring you all the latest developments. This is Kabir Naqvi signing off even as the High Court clears the Gyanvapi survey for now. इंजीनियरिंग कर रहे हैं क्योंकि सभी लोग कर रहे हैं. Coaching is now starting from grade 3, 4, 5, 6. कोटा जाने वाली बीच राह में आधे टेस्ट देके हैं सिलेक्शन की चाह